Okay, welcome back dear friends. I am Dr. Kaleem Raza. Today in this video lecture we are going to discuss about the heart sounds. We will discuss about the S1 heart sound, S2 heart sound, S3 and S4. इस टॉपिक में से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा. तो फर्स्ट रिमेंबर दैट S1 heart sound, S1 sound is basically due to closure of atrioventricular valves, AV valves, and its duration is long and it's louder. S1 due to closure of the tricuspid and mitral valve, longer duration and louder. Then S2 is due to the closure of outopulmonary valve or semilunar valve, and duration of S2 is short as compared to the S1. Then next please let's discuss about S3 heart sound. S3 is basically passive rapid ventricular filling. Passive rapid ventricular filling. Commonly in pregnancy, पूछा जाता है प्रेगनेंसी में कौन सी हार्ट साउंड होगी. प्रेगनेंसी एनीमिया में भी मिल सकती है एंड एथलीट्स में भी. इट्स नॉर्मल. S3 heart sound due to the passive rapid filling of the ventricles. Then last heart sound is the S4. S4 में क्या होगा, जब लेट्स सपोज आपको किसी हार्ट के किसी पोर्शन का इन्फार्क्ट हो गया है तो वाल क्या हो जाएगी, आपके मायोकार्डियम की रिजिड हो जाएगी. So S4 is basically when your atria have to push the blood against the rigid ventricle wall, and this is common in myocardial infarction and then hypertrophic obstructive cardiomyopathy. किसमें, MI में प्लस hypertrophic obstructive cardiomyopathy when atria have to contract the blood against rigid ventricle wall. So this is basically S4 heart sound. I hope you will remember that difference. आप इसको लिखेंगे नोट्स में, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा. थैंक यू.